So our second question is, in order to prevent tampering of EVM, there is a need for some urgent technical and administrative changes. Discuss. So EVM के बारे में बोलना है. Need to urgent EVM, there is a need for some urgent technical and administrative changes. Discuss. तो यहाँ पर बोल रहा है जो चिंगिस 787 इन्होंने लिखा है द EVM were commissioned in 1989 by Election Commission of India. So commissioned in 1989 by the Election Commission of India. Allegation of booth capturing and counting votes for such huge population were the main reason for its introduction in India. So booth capturing and counting votes for such huge population were the main reasons for its introduction in India. Sorry, EVM or standard mechanism is standalone mechanism. EVM are standalone mechanism that are not connected to any other network. So it is a standalone mechanisms that are not connected any other network. So software is brand into the CPU. So tampering with that is impossible. But in the insider replaces this with an identical hackable CPU which can be remotely controlled, then there is trouble. So it is remotely controlled. So it is the main trouble point it is. So EVM here it is the standalone mechanism that are not connected to any other network. So software is burned into the CPU, so tampering with that is impossible. And inside fraud can negate all safeguards of ECI, and this can be done at 3 places. So an inside fraud can negate all safeguards of ECI, Election Commission of India. So all inside fraud can negate all safeguards of ECI, and this can be done at 3 places. Like at EVM manufacturing के ऊपर उन्होंने देख रहे हैं अच्छे से उन्होंने काम करने चाहते हैं. So and EVM manufacturing के ऊपर अच्छे से जोर दे रहा है, and district level during non-election time, where it is kept for long period at time with inadequate security. At district level during the non-election times, where it is kept for long period of time with inadequate security. Security का problem है district level में. At first level checks prior to election, where they are serviced by authorized technicians. At first level checks prior to election, where those are serviced by authorized technicians. तो authorized technicians का भी problem है यहाँ पर. चेक करना, चेकिंग भी प्रॉब्लम होता है. काउंटर मेजर्स फॉर दोज आर लाइक काउंटर मेजर्स क्या क्या है, लाइक वी यूज ऑथेंटिकेशन मेथड. हम ऑथेंटिकेशन मेथड को यूज कर सकते हैं टू वेड आउट दिस काउंटर फैक्ट्स. यूज वीवीपैट को हम यूज कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ काउंटिंग, एंड कंप्लीट ओवरहॉल एट द ऑफ द प्रेजेंट स्टोर सिस्टम आफ्टर इलेक्शन. कंप्लीट ओवरहॉल of the present store system. So D is the engaging services of credible electronic security firm. हम engage कर सकते हैं credible electronic security firm बना सकते हैं. Let this pass through extreme hacking test and then cover the loopholes. So then हमने इसको अच्छे से उसको काउंटर कर सकते हैं हैकिंग को, और हम सब कुछ लूपहोल को भी हम ढूंढ सकते हैं और देख सकते हैं क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है और नहीं हो रहा है. इसको हम अच्छे से मेजर कर सकते हैं. तो काउंटर मेजर कर सकते हैं. द पॉपुलेशन इज सिंपली एनॉर्मस फॉर इंडिया टू गो बैक टू पेपर बैलेट्स. सो पेपर बैलेट्स के ऊपर अभी भी उन्होंने पीपल विश्वास रखते हैं. बट द एलिगेशंस हैव टू बी एड्रेस्ड एज द इंटीग्रिटी ऑफ द EVM is necessary for voters to trust election result. Voter trust is to election result. Therefore, appropriate actions should be taken by the ECI, Election Commission of India, to allay these fears and restore the confidence among citizens. तो confidence बनाए रखे citizen का, तो election commission को भी अच्छे से काम करना होगा यहाँ पर इसका ऊपर. तो thank you friends. I think it will simply discuss now, and others also gave here some of the important need to be. और हम क्या कर सकते हैं, like random allotment of EVM mechanisms to states and procurement
and supply of EVM need to be more authenticated, and strict guidelines to given to a officer. All party meeting need to conduct, and patriarchal voting need to be done in all form bring faith of EVM system. So यहाँ पर देख लिया तो क्या क्या हमने कर सकते हैं. Strict guidelines for government and supply of EVM and random allotment of EVM machines to states, and but हमने certain change कर सकते हैं EVM को, like when machines are in election commission in India, so when it transport to district authority, when it hand over to local level, तो हम कुछ कुछ सर्टेन चेंज कर सकते हैं. जब हम दे रहे हैं उनको भी कुछ गाइडलाइंस बोल दिया जाएगा, अगर कोई भी प्रॉब्लम आ गया तो आपको दोषारोप करेंगे. तो इस तरह से तो आपको देखिए, तो बहुत ही अच्छे से हमने इसको एक्सप्लेन किया है. तो जहाँ पर हमने पूरी की पूरी क्वेश्चन को, जहाँ पर रीजन्स फॉर क्रिटिसिज्म, यहाँ पर ईवीएम के ऊपर क्रिटिसिज्म भी होते हैं. इट कैन बी हैक्ड, इसको हैक किया जा सकता है. इट कैन बी टेम्पर्ड अनटेस्टेड अक्रॉस द ग्लोब for its use in election. Many lose all data if any damage happens. So यहाँ पर बहुत सी प्रॉब्लम होते हैं. So thank you.